तो यार आप सभी का स्वागत है होराइजन फॉरबिडन वेस्ट प्ले थ्रू गेम प्ले पार्ट 67 में। तो यार अभी हम एक थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं सारी जो चेंजेस हुए हैं और उसका जोर से बात करेंगे। शायद यहाँ पे एक और चीज़ आई है कुछ। Hey, do you... Sure. Tilda's the one who rescued me. Did she say why she saved you? She knew Elizabeth. She was willing to share information. But you still don't. Where I come from, the higher the price, I'd be careful. ओके, एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं और कुछ तो नहीं है। इसके रूम में भी थोड़ी बहुत चीज़ें आई हैं शायद। हाँ, All this time, I've been so focused on what Elizabeth was like, what she would do. I was wrong to hold Beta to that standard. I probably shouldn't even be doing it to myself. I'll try to do better. When it looks impossible, look deeper. And then fight like you can win. I will, Rost. Now and always. So Silent's plan was to trick Regalla into sacrificing her tribe in a hopeless battle against the Zeniths. It's so... heartless. Hikaru, Dekka, Katalo, countless others. I won't let their lives be thrown away. Focus. It's Varl's. I used to think no Nora would ever accept one, but Varl did. Even when he was overwhelmed. He refused to let me push him away. I failed Varl at Gemini. I should have pushed harder. I should have done more. I'd give anything to have him back. तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों जेमिनी नहीं करना चाहता था, वाल की वजह से। और एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ बचा तो नहीं है। Right, so this here and this there. But why? ऊपर गाय का रूम भी एक बार चेक कर लेंगे। A lot of Utaru belongings. Must be Zoe's. ठीक है, ये हो गया। एक बार नीचे का चेक कर लेते हैं। ये क्या क्या खुला है? अच्छा, एक तो ये पावर सेल खुला है और कुछ तो होगा यहाँ पे जहाँ पे पावर सेल्स माल हो सके। यहाँ तो नहीं है। Oh. I guess this door's unlocked now. This must have been Beta's private room.
Aloy, if you were listening to this, then, things didn't go as planned at Gemini. I know you'll keep your promise. Which means I must be dead. Well, that sounds familiar, doesn't it? But a lot's happened since you found me in that ectogenic chamber. Thank you, Aloy. You've been my shelter. And I would risk it all again to be by your side. I know you'll find a way forward. That's what you do. I'm sorry, Beta. But I'm getting you back, no matter what it takes. Oh, looks like I can... There's more machinery in here. Might have had something to do with the facility's operations. The vault. I found a locked door behind... the vent in the basement. Wonder if that's it. Looks like a power cell could fit here. ओके पावर सेल समझे कहाँ से लाना है। पहले पावर सेल लाते हैं, मुझे पता है कहाँ से लाना है। यहाँ से जाना है, यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ पे एक है। मैं सोच ही रहा था कि दूसरे वाले का काम क्या है। देखते क्या होता है इससे। Okay, that console has power now. From the looks of this data, Hephaestus tried multiple times to hack into the repair bay. But doesn't look like it succeeded. ये शायद किसी काम का हो सकता है, शायद ये देखना पड़ेगा। और क्या क्या देखते हैं यहाँ पे। एक ये है, उसके बाद मेन डोर आता है। अब इस एरिया में देखते हैं क्या है। जो से बात करने से एक सेकंड, एक तो ये है। अब तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे क्या दुख सबसे ज्यादा है वाल के मरने का, एक बार जब जो से बात करेंगे तो। ओके, ये क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे से एक चेस्ट थी, और यहाँ पे क्या है? अब देखते हैं हम खोल सकते हैं क्या इसको। मुझे और कुछ लग नहीं रहा कि इससे किसी और चीज से खुलेगा।
एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब हमें देखना है हमारे पास कुछ ऐसा आया क्या जिससे हम कर सकते हैं कुछ। डेटा पॉइंट्स में क्वेस्ट के अंदर था ना? नहीं, आरसीसीसी में था। ओके, ये क्या सीन है? अब ये देखो, 9 6 to 6। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे सीन। बस सारा चेक करते हैं। काम करते हैं, सबसे पहले ट्राई करते हैं 9 6 to 6 6 to 6। That door needs a code. Maybe there's something in my data points that can help. Well, that didn't work. अरे यार, Well, that didn't work. ठीक है, ये तो नहीं है। दोबारा से चेक करते हैं। आरसीसी में होगा जो भी होगा। हर एक नंबर जो दिखे उसको देखते हैं। यहाँ पे 11 और वर्ड है। सो 9 6 to 6 1 1। क्या लगता है तुम्हें, ऐसा कुछ है क्या नंबर? इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ करूंगा नहीं, मेनली तो ये सारी चीज़ें बेस को करेंगे अच्छे से एक्सप्लोर। जैसे कि हमें बेटा का काफ़ी सारा सामान मिला।
ठीक है, इतना कंफर्म्ड है कि 9 है सबसे पहले। उसका 66 है। उसका 11 है। अच्छा हाँ, इसमें बेटा ने कुछ और कर रहा था ना। 8, ये रहा, अगस्त वॉज ओनली 8। तो देखते हैं अब होता है कि The guy नहीं। who designed this place left a bunch of data behind. ओके, Data found one of his entries too. सो Maybe something in them will help with the door? 6261 क्या लगता है होगा? There. हो गया। शू, फाइनली हमने बेस के सारी चीजें कर लिए एक्सप्लोर। पता नहीं क्या होगा। ओह, काफी डेटा है यहाँ पे। What is this place? ओके, अब हमें क्या मिला डेटा पॉइंट्स। फाइनली आरसीसी में हमें मिले 5 डेटा पॉइंट्स। किलानी जेंसन, फेना लियोन, एमा इरविंग, डेविड मकूटो एंड ईथन रीड। इनको बाद में सुनेंगे। देखते हो इससे कुछ रिलेटेड तो नहीं है एक बार। ठीक है, इतने सुनते हुए चलेंगे इनको। क्या पता कुछ सही सामान मिल जाए। सामान तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ, वहां से तो आए अच्छा है। The Got to be honest, I don't really know what to say to the future. So I guess I'll say something to the past instead. Mom, Dad, I know you'll never hear this, but I wanted to say thank you. For all those times you dragged me along as a kid to volunteer at hot zone relief centers. You used to say, you have to pay it forward. The future will always be brighter for it. I'm trying to live up to your example. I love you. We'll be together again soon. ओके, ये बेसिकली मैसेजेस है इन लोग जिन लोगों ने पूरा बेस बनाया है उनके। तो एक बार सुनते हैं सारे, छोटे से ही है। The day I was supposed to meet my sister's new baby, a vert swooped in and a crew of masked commandos threw a bag over my head. Next thing I knew, I was being told how the world would end and given a choice. Die now or help Zero Dawn and die later. At least Nicole, Ella, and baby Aiden will be safe in Elysium. Gave up my allotment to make sure they could stay together. I don't know if any of this will actually work. Zero Dawn, cradle-raised humans. But if it does, do better than we did, okay? Do I say it now? Okay. My name is Emma Irving, and I'm 8 years old, and my favorite animal is a fox. Do you have foxes in the future? I hope so. They're the cutest. And super smart. Dad said we have to go underground soon, just like a fox. And then the bad robots won't get us. So, I guess this is H and G. Hi and goodbye. The last time I spoke to Leanna, they were just about to ship out to the Pacific Front. They really believed that if they could buy us some time, it'd be worth it. That Zero Dawn would save us. But if you were listening to this, then they were right. It was worth it. Their name was Leanna Jensen. 9th Civilian Guard Brigade for Operation Enduring Victory. And they were so, so brave. So, yeah, I told the rest
rest of the team. I was standing in the cafeteria, trying to pick out a god-awful meal cartridge when it suddenly hit me. Every school field trip, August always asked me to pack extra in his lunch pack so that he could share it with his friends. I don't know how I was lucky enough to end up with kids so generous. And I know he'd want to share this too. So, to whoever finds this place, this was us. ओके, तो सारी बेसिकली रिकॉर्डिंग्स हैं जो इन लोगों ने फ्यूचर के लिए करी थी कि अगर कोई लोग फाइनली अगर बच जाए, ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, तो ये अपनी यादें आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट मतलब बता सकते हैं कि क्या थे, क्या हुआ था वगैरह। काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग चीज़ थी अगर तुम सुनो ध्यान से तो। चलो यार, मेरे हिसाब से वर्थ इट था ये जो कोड हमने ढूंढा इतनी मुश्किल से। हमने ये सारा कर लिया है अब फाइनली अनलॉक। अब एक बार गाया के रूम में जाना है हमें, फिर हम जो से बात करेंगे। और एक बार चेक भी कर लेते हैं इनसे कोई बातचीत वगैरह तो नहीं करनी है, अब नहीं करनी है, इससे भी नहीं करनी है। अब ऊपर चलते हैं। एटलीस्ट लेकिन यार अगर उन 5 ऑडियो पॉइंट्स को सुनने के बाद एटलीस्ट इसको कुछ ना कुछ बोलना तो चाहिए था अलॉय को, अपने थॉट्स बताने चाहिए थे। It feels empty in here without Gaia. ठीक है, अब हम करेंगे जोर से बात। हमने ऑलमोस्ट सारा सब कुछ कर लिया है यहाँ पे जो हम कर सकते थे। अब बस एक दो क्वेस्ट के बाद आके बात करते रहेंगे कैरेक्टर्स से यहाँ पे। आज तुम्हें समझ में आएगा मुझे क्यों दुख हुआ वाल के मरने का सबसे ज्यादा। ध्यान से सुनना। फाइनली यहाँ पर अब एक आ गया है। Can't let the cold distract me. Over here, Aloy. We would come out here to tend to the garden. Sometimes I needed fresh air. Other times we would simply sit and watch the sunrise. So when we returned from Gemini, it seemed fitting that he be laid to rest here. Now he can always look out at Plainsong and further east to the Nora sacred lands. He would have liked that. He often spoke of his sister, Bala. He said she used to gather her favorite golden blooms and tie them to her spear. Their mother called it useless, but Bala was stubborn. Yeah, she seemed like that. It wasn't easy. But I tracked down the flower. Gathered its seeds. As verdant limbs wither, roots rot in snow, still the sea rises as certain as stone. From death follows new life.
So it is with the land. And so it is with us. I'm with child, Aloy. I was going to tell him when he got back from Gemini. Instead, one day, I'll bring our child here. We'll sit among the blooms and watch the sunrise. I never got to tell him. To thank him. For saving my life, sure, but also for not giving up on me. He always knew. Goodbye, Varl. I promise to look after them. आप समझे तुम कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा था सबसे ज्यादा वाल के उस पे? But for now, I need to go to the fabrication terminal to install the new override on my spear. Then I'll use it on a sunwing and get ready for an entrance Regalla will never forget. मतलब वाल को पता भी नहीं कि उसका बच्चा होने वाला है, जो प्रेग्नेंट है वगैरह। वाल कितना सही दिखाया है यार स्टार्टिंग से। मतलब फर्स्ट गेम में इतना नहीं था जितना सेकंड गेम में दिखाया था यार। नहीं करना चाहिए था ऐसा गेम डेवलपर्स को हमारे साथ। I'm gonna clean my gear later. I could do yours if you want. I cleaned it already. Yeah, of course. Thank you. Don't mention it. Think you can manage things here while I go help Akaro? Stopping Regalla's war. It'll help us take the fight to the Zeniths? Yes. Then I'll make sure the rest of us are ready upon your return. Okay. I know we both want to make the Zeniths pay for what they've done, but once we infiltrate their base, our priority will be to get Gaia and Beta out of there. Don't worry. I won't go seeking revenge like some blood-crazed Tenakth. Wherever your arrow strikes, mine will follow. Let's hope we hit our targets. How's Aaron doing? For a moment there, he thought he'd lost both you and Varl. But he never truly succumbed to despair. Guess that Oseram's stubbornness comes in handy sometimes. We'll be facing Spectre drones soon. Aaron and Katalo have fought them before, so... Already asked them to run us through some combat drills. Aaron moves like an oaf, but he's good with that hammer. I need to get going. Whatever you plan on doing against Regalla, you better return to us in one piece. I'll try. म्यूजिक सुन रहे हो कितना सैड म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर। इतना बड़ा कैरेक्टर मार दिया इन लोगों ने, नहीं करना चाहिए था यार ऐसा। जेन्युइनली फीलिंग है कि ये नहीं होना चाहिए था ऐसा कुछ। और फाइनली अगर तुम्हें याद हो जो जेमिनाई के स्टार्टिंग के अंदर जब ये जा रहे थे जेमिनाई में, तो बेटा ने सनविंग को उड़ते हुए देखा था। तो मेरे ख्याल से उसी वजह से बेटा ने सनविंग, वो उसको बड़ा अच्छा दिखा था देखने में। मैं एक्सप्रेशन देखोगे तुम बेटा के, तो मेरे हिसाब से इसी वजह से उसने सनविंग का ओवरराइड दिया था एलॉय को, जो सब काम आएगा। ओके फाइनली हमें अब सनविंग का मिल चुका है। अब उसको जल्दी से सनविंग के ऊपर लगाएंगे। I think there are some roosting at the top of the mountain. ओके अब हमें माउंटेन के टॉप पे जाना है और वहां पे सनविंग को ओवरराइड करना है। उसके बाद हम फाइनली उड़ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। Okay, I need to find a sunwing to override. Better head up the mountain.
आप देखते कहाँ जाना है हमें। Race? Well, they definitely don't sound like rebels. Maybe if I follow their tracks, I can find out where they're headed. I can probably use my focus to follow the tracks those riders left behind. अगर तुम्हें याद हो तो सिग्नल टावर्स नहीं, सॉरी सिग्नल टावर्स नहीं, सिग्नल्स का एक हमें करना था। सिग्नल स्पाइक करके क्वेस्ट थी, हमने उसकी वजह से हम ऊपर गए थे और वहां पे हमें सनविक्स मिले थे, तो हमें उनके पास ही जाना है, लेकिन छुपते हुए जाना है थोड़ा। अगर लड़ाई करनी पड़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रहे। Good. There are sunwings up here. We'll have to approach them quietly. Got it. This is it! I'm in the air! Whoa! Head rush. Tilda, I'm in the air. Then you'll want to pick up an energy cell on one of the ancient forest titans. But first you must send out a pulse to activate them. I've sent you the necessary software. To deploy it, you'll have to override one of the communication machines you refer to as Tallnecks. There's one in the middle of the desert that should do nicely. On it. फाइनली हम उड़ सकते हैं। अब आया असली मजा। जिसे कहते हैं ना, ये है एक्चुअल अपग्रेड गेम के अंदर पिछले गेम से। ये अकेला वर्थ इट है, देख रहे हो। There's a tall neck. Need to get on top of its head. ओके, स्लो डाउन। Hold R1 to ascend and Now, how to land this thing? R2 to descend. अच्छा,
Finally! Just gotta override it. Okay, Tilda. I've overridden the tall neck. Good. Then the energy cells are now primed. Simply pick one up on a Horus. The nearest one should be northwest of your position. Dropping it on Regalla's machine should produce quite a spectacle. Thanks for the assist. I told you, I want to help. Whoa! I'm gonna get used to that. कंट्रोल्स थोड़ा सा मुश्किल है, सनविंग के ज्यादा नहीं। Regalla's rebels. Reinforcements, maybe. Heading for the grove. I hope Ikaru and this Noct can hold out any longer. There's the energy cell. Right on the Titan's back. ओ यहीं से। Got the cell. Now on to the grove. Pulse from Tonic should have reactivated all the energy cells in the region. I should be able to pick up more from any Horus I fly to. Pretty useful, even after I deal with Regalla. ओके, शायद से हमें कुछ पता चला है इंफॉर्मेशन ये वाली होरस सेल्स के बारे में, लेकिन कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कैसे फायदा करेगा, हमें कुछ आइडिया नहीं है अभी। मजा आ गया देखकर सनविंग को यार उड़ते हुए। अगर सोचो तुम स्टॉर्मबर्ड के ऊपर चढ़ जाओ तो, अगर स्टॉर्मबर्ड पे भी उड़ सके तो। लेकिन यार स्टॉर्मबर्ड बहुत ज़्यादा वायलेंट है इस मामले में। सनविंग काफ़ी परफेक्ट मशीन बनाई गई है, मेरे हिसाब से बनाया इसको सिर्फ उड़ने के लिए गया है, और काफ़ी एडवांस्ड भी है सनविंग बाकी मशीनों के मुकाबले। Inside. Ikaru will soon be dead. It's all over, Chaplain. I gotta drop it now. Here it goes. It's Aloy! She flies on the wings of the Ten. The tide has turned! Push through! End of the line, Hakon. Now on your knees, and I'll give you the death you didn't have the spine to give me.
They're down! The machines! All of them! They're down! What? How's that possible? Regalla! Enough bloodshed! Let's settle this. You and me. Easy to say when you're atop a machine. Well, that was just to get your attention. I don't need any help to take you down. Fine. I accept your challenge. And once I'm done with you, I'll get to finish the slaughter. We'll see about that. The duel is set. Let none interfere. You will leave no tails behind! भाई साहब जो भी सीन हुए हैं सारे, जो आवाजें आ रही थी, बैकग्राउंड इफेक्ट्स थे, बैकग्राउंड साउंड्स थी, भाई साहब देख के लग रहा था कि भाई ये है असली प्रोटैगनिस्ट, जिसे कहते हैं ना। Only strength can conquer. साया के साथ जल्दी से लो। There is no sacrifice too great. Ooh! Alright, so that's how it's gonna be. ओके अब इसको यही करना है, सबसे पहले तो इसके ऊपर ये मार दो। लगता है ये किसी काम का नहीं है। ओह डैमेज। सारा सामान ले लेते जल्दी से यहाँ से। ओ जैसे सोचा था हुआ नहीं, उसका डैमेज ज्यादा है। कोई ना। Alright, so that's how it's gonna be. I will paint this hallowed soil with your blood. उप्स, डैमेज कुछ ज्यादा ही एक्यूरेसी नहीं है इसकी। भाई साहब चल यहीं पर हूँ मैं, आजा, क्या करेगी। अच्छा इसके पास भी है ये। पता है क्या, आ जाओ, बहुत हो गया।
is where it ends. Yeah, it is. जिसे कहते हैं ना लिटरली फाइनल बॉस फाइट जैसी फीलिंग आ रही है इसको देख के। अब इसके लिए I need to get my stamina back first. और कहीं कुछ है? पहले स्टैमिना बढ़ने दो। नहीं रहने दो अभी। वीकनेस फायर है। चुप क्यों नहीं हो रही? बोले जा रही है। You're nothing but a tale for children. I can keep going. Build up my stamina.
हो गया, हो गया। Here I am again, on my knees before bootlets and cowards. Go ahead, run me through. Shut your mouth, traitor. It was you who flew in on the wings of the 10. You who challenged her by our rights. You must decide her fate. I spared her once. It only made things worse. She was the best of my marshals. What a waste. She's dangerous, all right. But maybe that's exactly what I need. Cowards! What more do you have to conspire about? Whether you live or die. I'm not here to forgive you for your crimes. But there's another battle ahead. Against an enemy more powerful than anything you can imagine. And I need people. A squad. That's willing to do whatever it takes. I don't want your mercy. It's not mercy. The battle I'm talking about will be charging into a nightmare. A better death than this? Yes. My blood is yours. Your enemies are mine. Meet us at our stronghold, in the mountains near Plainsong. You mean to send her alone? Without even an armed guard? She does not need it. I will be there. You have my word. I'll hold you to it. Chief, there's something you both need to see. In the throne room. He surrendered to our guards outside the grove. Claims he has an urgent message for the Outlander who defeated Regalla. So, state it. It's for her alone. From an interested party. I'm gonna need some privacy. Clear the room. Put him with the rest of Regalla's soldiers. I'll see you back at base. You saved the tribe. Let me help you with your mission. No. With Regalla gone, you have a chance to build the future you dreamed of. So get to your task. Then at least allow me to give you this. Armor for the battle ahead. May it keep you safe. Thank you. Do you have any idea what you've just done? Oh, it's a pleasure to see you too, Silence. Congratulations on your victory. You saved the Tenakth for a few weeks. Unfortunately, you've doomed the entire planet as well. Wrong. I don't need a Tenakth army to defeat the Zeniths. Oh, Aloy. Have you learned nothing about the enemy we're up against? More than you, hiding whatever hole you found. My idea is just better than anything you ever came up with. Go on. No, not here. We're doing this my way. Face to face,
And with the weapon you've developed. And why would I agree to that? Because I'm your only way of beating the Zeniths, and getting the copy of Apollo that's on their ship. So meet me at my base. Mountains west of Plainsong. Time to submit to the inevitable silence and follow the person who actually knows what she's doing. Don't be late. Tilda, Damn. you there? I did it. Silence is on board, so head to my base. Impressive.